Hello friends, Namaskar dosto. Thank you for watching my video, and if you are a regular watcher, thank you so much. A special thanks definitely to members. इसीलिए आप लोगों के लिए I release special videos. Thank you so much for joining my channel. ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली इन द कमोडिटी मार्केट के बारे में. Before I start off, I should give a general disclaimer which I used to give before. पहले देता था, बीच में रुक गया कि ट्रेडिंग जो है इट्स अ वेरी रिस्की गेम, इसीलिए इतना रिवॉर्ड भी है. रिस्क का ऑपोजिट है रिवॉर्ड. So similarly, trading is a very risky game. It is not for everyone, and you can lose a lot of money. You can blow up your account. A lot of bad things can happen with regard to the money. उसमें एक जनरल रूल आप याद रखिए कि किसी का भी सुन के ट्रेड मत कीजिएगा, बिकॉज एवरीवन, इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, कैन लूज मनी. सो किसी का सुन के नहीं, खुद का सुन के, खुद को जान के, खुद को मार्केट एनालिसिस करके ही फिर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए. एंड इट्स अ वेरी इंटेंस थिंग. आप जरूर सीख सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट चैनल है सीखने का, तो पहले सीख लीजिए, थोड़ा खुद कीजिए. एंड अगर कहीं पे गलत हो रहा है, पहले जो लोग बिगिनर्स है छोटे अकाउंट से स्टार्ट कीजिए. जब गलत होते दिख रहा है, आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है और उसके बारे में और जानने की कोशिश. तो लेट्स स्टार्ट विद द कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी मार्केट में दिस इज माय चार्ट जो आप लोग जानते हैं. दिस इज माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, जिसके जरिए मैं ट्रेड करता हूँ. लाइक दीज आर स्पेशलाइज्ड कैंडल्स. सो ये मेरे गाइड है इन द मार्केट. There are different variety of charts. There is, every chart has its advantage, disadvantage. I personally love to use this one. Now it is clearly tells me and shows me money. It makes helps me to make money. This is the silver. Clearly दिख रहा है. We enjoyed the buy ride. हम लोग right time पे exit opposite भी खेल रहे हैं. Silver is bearish. Silver bearish की तरफ move हो चुका है, and very likely it is the main टारगेट एरिया. जो हम लोग पहले भी बताए, रिवर्सल इज हैपनिंग. एम्प्टी लाइन, दिस रेड लाइन, एम्प्टी लाइन और द फ्लैट लाइंस, दीज आर द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट्स जहां से बाउंस बैक कैन हैपन, व्हिच विल बी वेरी मच नेचुरल. सिल्वर के लिए वी विल टेक अ गाइडेंस फ्रॉम इंटरनेशनल सिल्वर. इंटरनेशनल सिल्वर भी देखेंगे और गाइडेंस लेंगे. इंटरनेशनल सिल्वर भी क्लियरली हमारे चार्ट के हिसाब से सेल सिग्नल के बाद और भी बियरिश टर्न लिया है. बट एक चीज ध्यान रखना होगा, जब प्रोबेबिलिटी को देखिए, ट्रेड जब कर रहे हैं चारों तरफ देख के जंप कीजिएगा. प्रोबेबिलिटी देखिए बाई का ही अभी भी ज्यादा है, बिकॉज ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड ट्रेंड के हिसाब से प्रेफर्ड ट्रेड्स अभी भी बाई ब्रेकआउट, बाई सपोर्ट हम लोग कर नहीं सकते, because there is a full red candle sell signal, but preferred trades are those. That means ये जो non preferred trades हम लोग कर रहे हैं, those who are against the trend, so these trades we should do with smaller quantity, smaller risk exposure. That is important. And if say silver at one time the probability will fall in favor, then we can continuously increase our positions. So silver doesn't look healthy on the buy side. It more looks like a downside to me. And further down move can happen. बहुत important event आ रहा है, Federal Reserve interest rate decision, जिसके साथ मेरा usual live marathon चालू हो रहा है. अगर आप मेरे पास स्टूडेंट्स है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो all you have to do is ask the course coordinator for link. But आपको best है, it's largely for करंट बैच. हो सके आपको सीट ना मिले, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. करंट बैच को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए भी ये सेशन होल्ड किया गया था. दिस इज माय सिग्नेचर सेशन. एवरी टाइम व्हेन फेड कम्स आई होल्ड दिस लाइव मैराथन सेशन. और इस बार का मैराथन सेशन 3 दिन का होने वाला है. वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. वेडनेसडे इवनिंग से हम लोग चालू कर रहे हैं, टियर टुवर्ड्स द फ्राइडे मॉर्निंग.
So silver जिस तरफ भी हम लोग देखें, it's not looking very healthy right now, silver. And similarly हम लोग देख सकते हैं कि aluminium has turned bearish. जो हमारे outlook थे bearish, that is working. We should be happy. It is the trade is in profit. First of all, it has reached हमारे जो target. Those who want to book early profit, you can book partial, but don't book full. You can at least preferred booking is more towards this is the main reversal, but this is also important double bottom, and this is the sell trade win probability is around 50%, way more than buying. So sell ke taraf market aur ghum raha hai, and very likely I'll expect that aluminium will drop further and very likely will reach the 230 level. Next आ रहा है zinc. Zinc has been beautiful. क्या हम लोग शॉर्ट किए हैं और वो लेवल्स रीच हो चुके हैं जो हमारे, and very likely partial profit booking at this exact level was very much recommended. अब जाके हम लोग बाकी जो bearish position है we will wait and further breakdown जब होगा इस level का we will increase the position or we will wait for an opposite move to exit more quantity. अभी तक outlook bearish, position bearish. So we are flowing with the market. This is flowing with the market. Market जैसा बोल रहा है हम लोग वैसे ही करें. Next is lead and copper. देखेंगे lead काफी टाइम से bearish. I don't trade personally lead too much, but lead has been bearish. But it has reached testing a very important support zone. जो rainbow members हैं आप लोग जानते हैं what is this support? So very important support zone. साथ में also the second target ये empty line के बाद the target becomes this flat line or touch of the long term line. So touch होने जा रहा है, that is the target. उसके बाद थोड़ा reversal is very much likely. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉपर. कॉपर के लिए हम लोग इंटरनेशनल चार्ट का इस्तेमाल करेंगे. कॉपर हैज बीन वेरी बियरिश और काफी टाइम से बियरिश रहा है. दैट्स हम लोग एकदम सही थे, सही जा रहे हैं कॉपर में. It has reached a very important area. देखिए similar वो important empty line it has reached, and it is better to hold short position, but आप चाहो तो partial profit लेके wait कर सकते, because this is a very important level. Copper may stop here for some time, give a correction like this green socks, and then again drop. So we will remain bearish preferably. And but these are areas where you can do some risk management and take some money home. Next हम लोग जिसको देख रहे हैं that is the US crude oil. Crude oil in the daily chart we can't buy right now. Crude oil has been going under a correction, beautiful moving up. We can't buy unless we have a full green candle. I always prefer to abide by my rule. If you change the time frame, if your trading time frame is different, the rainbow has definitely given a buy signal and buy opportunity. So rainbow walks beautifully, but we'll have to abide by your time frame and rule. So हम लोग अभी at least in the daily chart, outlook is not clear. Buying is against the main trend line. This is the orange is the main trend line. It is against the main trend line, so it's a contra, and so will not prefer long positions. So if let's look at gold, what is the thinking? क्या चल रहा है gold में? Gold बहुत ही mixed picture में, थोड़ा avoid करना ही बेहतर होगा. Currently it's more towards bearish side. एक buy signal fail हुआ है, but उस दिन fundamental data था. With the non-farm we got a sell signal and heading towards another important fundamental Fed. So Fed gold silver is very sensitive to Federal Reserve and interest rate and monetary policies. अगर आप फंडामेंटल में इंटरेस्टेड हैं, you can join. If you want, you can join my course in Elan Markets. All you have to do is SAA, and you can simply check out these. This is the masterclass that covers the fundamental, and this gives you access to my trading setup. So this is the silver. Silver is bearish. We have seen gold is not so healthy. We will look at natural gas is the one where the buying is strong. Natural gas जहाँ पे मैं buy hold कर रहा हूँ, but it is a volatile counter.
अगर कल रात का आप मूव देखे हैं, if you are not familiar with natural gas, you'll be trapped because look at the move. Look at the normal candle move. Big drop from the resistance level. And today big move up. So natural gas can confuse you at times. It's usually better played in the more shorter time frame, but natural gas can be very, very volatile. But it also observes price action. Look at this beautiful more evening star. And after that breakdown, again buying exactly from this level, the sell-off is coming. But overall, in the daily chart, in the context of the bigger picture, this is a comeback. This is a strong comeback in the natural gas. And fundamentally, हम लोग इसका wait कर रहे थे. So, and as per rule, I better ride the up move. अब कैसे ride करना है with MCX future, वो international fund, that I can decide. How I'm going to take my risk. And I'm aware that these are very important resistance जहां पे है natural gas. So struggle जो होगा यहाँ पे होगा ही. And once we get a break of this flat line, especially 3.06, आप लोग alert डाल सकते हैं. ऐसे Alt A click करके crossing up. ये alert डाल दीजिए. When natural gas crosses up this level, it will be very strong. It will be very strong. It will reach towards 3.2. And very finally will test at least 3.46. So natural gas, I remain somewhat bullish. I'll prefer a break, and until the break happens, I'll remain in the lower quantity of the position. Then only I'll prefer to increase. इसके अलावा जो और एक चार्ट हम लोग देखेंगे एज एग्रीकल्चरल का एज अ कंपाइलर सब एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ब्रॉडली मिला के. So that is the DBA fund and it is currently exit. It's a full exit from the agriculture and we'll have to wait for a major breakout here. Once a major breakout happens, then only we are. So NG is crossing up the level. So let's look at the natural gas. Actual price is trying to hit and cross this level. So closing will be very important. Closing इसके ऊपर important तो चाहिए होगा. तो लाइन चार्ट करंटली वो लेवल पे है. इसके ऊपर एक क्लोज 3.08 के ऊपर एक क्लोज बहुत ही बढ़िया रहेगा. So natural gas quite bullish I am, and I think natural gas has further potential to go up. तो ब्रॉडली क्या दिखा? ब्रॉडली दिखा कि मेटल्स आर इन प्रेशर. जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है दैट इज ऑन द बाय साइड नेचुरल गैस एंड द सेल साइड ऑन द मेटल्स, whereas crude oil as per daily in the mixed time frame. So ये रहे commodity का picture. I hope मेरा discussion helped you, and if it's helping, don't forget to like the video. All the best from my side, and as always, happy trading.